on also you can listen. No need to write, just listen. Okay. ठीक. Now first important singularities is called isolated singularity. Isolated singularity. They may ask you in exam definition also, singularity, isolated singularity. So in roughly if you say isolated किसको बोलते हैं? Simple word में. Isolated in one place, only one Yes. is there. Isolated Nothing else. means any singularity is said to be isolated singularity. In the neighborhood of that point, no one should be there. एक example बोलता हूँ मैं. Suppose you have a circle of 1 unit radius. Okay, and in our function f of z, we have singular points are z is equal to 3 and z is equal to 5. So z is equal to 3 and z is equal to 5, both are lies outside the circle. Okay. Okay. This is suppose a circle of radius 1 unit, and suppose in our function z we have different points. बहुत दूर है समझिए इनसे. 5 है, 9 है, इन से बहुत दूर है, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं. Okay. ठीक है. नेक्स्ट रिमूव. अगर वो सर्कल से बहुत दूर है पॉइंट, बहुत दूर so है, at that point isolated singularity. आइसोलेटेड सिंगुलरिटी. वो रेडियस में है ही नहीं, लो बहुत दूर है. Oh. और removable singularity. So a singularity which can be removable. Next, essential singularity. What do you mean by essential? Important Essential to means solve the compulsory. problem. It cannot be removed. Okay. Essential singularity. Now last, in our singularity, our main important today's our discussion is about pole. It's very important. This one we have to discuss in detail. Okay. Okay. Now I am writing the definition of pole. बाकी सब लोगों की डेफिनेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट पोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ए पॉइंट ए नॉट is said to be a point a naught is said to be pole of order m, pole of order m of function f of z, if we have a condition here, limit z tends to a naught, लिमिट z टेंस टू a naught. ये फार्मूला बनता देखिए बाद में, अच्छा याद रख लीजिए इसको आप. z माइनस a naught होल टू द पावर ऑफ m into f of z, and that value should be equal to finite. ओके. पोल कैसा फाइंड आउट करेंगे अपन? जो भी पॉइंट है, सपोज a naught इज सेट टू बी पोल, a naught अगर पोल है तो लिमिट, अगर सपोज अपने पास पॉइंट 1 है, तो देन हाउ टू फाइंड आउट लिमिट z टेंस टू 1, z माइनस 1 होल पावर m f of z. f of z तो क्वेश्चन में रहता है आपको इमीडिएटली इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कर रहा हूं. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेट मी डू वन एग्जांपल. Suppose you have our f of z value is equal to z by z minus 3, z minus 2 into z minus 3 whole square. Suppose you have, this is your f of z value. Okay. Now can you tell me how many singular points are there? 2 points. Yes. What are those two? 2 and 3. Yes. Therefore
Z is equal to 2, 3 are singular points of f of z. Singular points of f of z. Singular points of f of z. Now we are going to find out pole. अब देखिए f of z value is z by z minus 2 into z minus 3. Okay. Now I am going to find out the pole of this point 2. ये 2 के ऊपर इसका पोल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कैसा करेंगे? लिमिट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, लिमिट z tends to a0. point we are taking as first point 2 z tends to 2 और यहाँ पे क्या होगा? z minus 2 by the point is 2 whole to the power of इसका पावर कितना है? यहाँ पे 1 है ना, तो पावर इज 1 here. Power is 1 into f of z. Okay. Which is equal to limit z tends to 2, z minus 2 will be as it is. What is f of z value? Z by z minus z minus 2 into z minus 3 whole square. z minus 3 whole square. Z minus 3 whole square. So this z minus 2 from here, and from here it is cancelled. And now if you apply the limit, wherever z is there, if you put 2, we are getting our answer is 2 by 2 minus 3 whole square. So then what is the answer? 2 only, because 2 minus 3 is minus 1. Minus 1 whole square is 1. So we're getting some finite value now. So therefore we can say that z is equal to 2 is a pole of f of z, pole of f of z of, इसका पावर कितना था? 1 था ना? 1 है इसका फर्स्ट वाला पॉइंट, ऑर्डर 1. दूसरे वाले का ऑर्डर 2 है, तो जिसका ऑर्डर 1 है उसको बोलते हैं सिंपल पोल, और जिसका ऑर्डर 2 है उसको बोलते हैं डबल पोल या नहीं तो मल्टीपल पोल. ओके. पोल फाइंड आउट करने का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता आपको. ये एक एग्जांपल लिए अपन, और एक एग्जांपल लेंगे, इसमें आपको पोल कैसा रहता और ऑर्डर कैसा रहता आप जरा मेरे को देख के बोलिए. चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेंगे अपन. सपोज एग्जांपल f of z इज इक्वल टू, जस्ट मैं पोल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल कर रहा हूँ. देखिए साइन z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर into z plus I whole cube. Okay. Now first of all we will see how many poles are there and what are order of those. अच्छा, ये problem को this can also be written as, if we apply the limit z tends to, limit apply करें तो what is the sin z by z value? Limit theta tends to 0, sin theta by theta 1 हो जाता ना? Yes. So this can be written as z into z plus I, z plus I whole to the power of 3. तो मैं अगर आपसे पूछा how many poles are there, पोल, तो इसमें पहले आपको z is equal to 0 एक पोल है, ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 है. 1 साइन z बाई z तो 1 हो गया. 1 हो गया. हाँ जी, पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसको बोलेंगे अपन सिंपल पोल. अगर आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप सिंपल पोल. दिस इज कॉल्ड सिंपल पोल. एंड नाउ वी हैव वन मोर, that is z is equal to minus I now. Yes, z is minus I, pole This of is order pole 3. of order 3. Pole of order 3. और इसको बोलेंगे अपन कौन सा पोल? मल्टीपल पोल. या अगर ऑर्डर 2 है तो डबल पोल भी बोलते हैं, मल्टीपल पोल. सो लाइक दैट कोई भी क्वेश्चन में पोल फाइंड आउट कैसा करते हैं और पोल क्या है कैसे आइडेंटिफाई करते. ठीक है. अब पोल पे रेसिड्यू कैसा करते. नेक्स्ट टॉपिक है रेसिड्यू.
रेसिड्यू एट पोल, रेसिड्यू एट, अभी तक आपको पता चल गया पोल किसको बोलते हैं, और पोल किधर से आया बोल तो आपको सिंगुलैरिटीज में से आया, ओके ना, ओके रेसिड्यू एट पोल, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर, नाउ विल सर डिस्कस। ये अभी जो पोल्स अपन करे वो ऑल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज के? नहीं नहीं नहीं, ये पोल के है खाली, ओके जस्ट पोल्स, ये ओके आपको एग्जाम में खाली आपको डेफिनेशन पूछता है या नहीं पूछता, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ओके। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ये टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी है, ये पोल एक अलग कॉन्सेप्ट है, ओके कंप्लीटली डिफरेंट। ओके ठीक। कंप्लीटली डिफरेंट है। तो रेसिड्यू एट पोल, इसका डेफिनेशन और कैसा फाइंड आउट करेंगे, वर्किंग ग्रुप, लेट लेट पॉइंट लेट पॉइंट z नॉट इज, आप डेफिनेशन पढ़े तो खुद ही समझ में आता, मैं इतने सिंपल डेफिनेशन आपको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया बुक में से लेके, आपको देखे तो समझ में आता। लेट पॉइंट z नॉट इज ए पोल ऑफ f ऑफ z, पोल ऑफ f ऑफ z, then residue of f of z, residue of f of z, residue of f of z of pole z naught, of pole z naught is denoted by देखिए कैसा उसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय आर ई बोलेंगे, आर ई एस भी लिखते थोड़े बुक्स में, आर ई भी है, आर ई जेड है, रेसिड्यू थे। आर ई जेड नॉट मतलब रेसिड्यू ऑफ जेड नॉट, ये पॉइंट जो भी है, अगर 2 पे कर रहे आर ई ऑफ 2, 5 पे कर रहे आर ई ऑफ 5, जो भी पॉइंट पे आप रेसिड्यू ओके कर, ठीक है ना, एंड डिफाइंड एज, रेसिड्यू कैसा फाइंड आउट करते हैं, आज इसका फार्मूला लिख रहे हैं अपन, डिफाइंड एज रेसिड्यू ऑफ जेड नॉट, रेसिड्यू ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई, 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड dz, f integral over c f of z dz. This is called the way, the formula to find out residue at a particular pole. पोल पे रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करें, ओके ना, यस ओके। रेसिड्यू। अब सिंपल पोल पे रेसिड्यू कैसा करते हैं, और ऑर्डर एम पे रेसिड्यू कैसा करते हैं, उसका भी फार्मूला देख लीजिए आप। ओके अगर आपके पास सिंपल पोल है, सिंपल पोल मतलब ऑर्डर अगर 1 है, ठीक है ना, ऑर्डर अगर 1 है, सो देन हाउ टू फाइंड आउट रेसिड्यू, रेसिड्यू एट जेड नॉट, इससे पहले कभी ऑनलाइन पढ़े आप क्लासेस, यस सर, करे सो है पहले। ऐसे करें स्क्रीन पे बोर्ड पे, हाँ, जेड, लाइक ऐसा ड्राइंग बोर्ड ऐसा काइंड। जी, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड into f of z. This is the formula to find out simple pole residue at that point, limit z tends to z naught, z minus z naught into f of z. तो यहाँ भी करे देखिए, वो ओके इधर करे ना येलो से, सेम फाइंड आउट करा था हमने। अब भाई ये मल्टीपल पोल पे कैसा करते हैं, मल्टीपल पोल, so then same, third point is suppose z naught is a point, residue at z naught, it is equal to, फॉर्मूला अच्छा याद रखना है आपको, m-1 फैक्टोरियल, m-1 फैक्टोरियल
limit z tends to z naught, limit z tends to z naught, d power m minus 1 by dz power m minus 1 m minus 1 and z minus z naught whole to the power of m into f of z. So once again I will write it. अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो इसमें नहीं दिख रहा तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से भी लिख देता हूँ. 1 by it's a m minus 1 factorial limit z tends to z naught d power m minus 1 by dz power m minus 1 of z minus z naught whole to the power of m into f of z. क्योंकि ये बहुत यूज हो रहा इसलिए मैं इसको और 2 बार लिख दिया. तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट पोल. अब क्वेश्चंस करके देखेंगे कैसा फाइंड आउट करेंगे अपन पोल, कौन से ऑर्डर पे है. ठीक है ना. Okay, sir. लेट अस सी सम क्वेश्चंस. एग्जांपल, क्वेश्चन एग्जांपल नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है. इफ f of z is equal to, if f of z is equal to 1 by z minus 2 whole to the power of 4, z minus 2 whole to the power of 4 into z minus 1 into z minus 1, find a residue, find a residue at all poles. जितने भी उसमें पोल्स है सबके ऊपर रेसिड्यू करना. Okay. Now the solution is here. How many poles are there? Z is equal to 1. एक पोल है. ये कौन सा पोल है? Two. It's simple pole. Single point. Simple pole. pole. Order 1. Yes. Simple pole. This is understood. Simple pole means order 1 ही रहेगा. And Z is equal to 2 भी एक पोल है ना. ये multiple pole. Yes. Multiple pole of order 2. of order क्या है? 4 है ना. of order 4. 4 है sir वो. order 4. तो दोनों के ऊपर फाइंड आउट करेंगे पोल्स, राइट ना. पहले रेसिड्यू एट द पॉइंट 1. फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी, दैट इज लिमिट z टेंड्स टू 1 z minus 1 into f of z, which is equal to limit z tends to 1. It's a z minus 1 as it is. We have our f of z value is 1 by what? Z minus 2 whole to the power of 4 into z minus 1. From this z minus 1 Z cancel, minus 1, Z minus 1 and you cancel. apply the limiter 1 minus 2 whole to the power of 4. So what is the answer? It's 1 only. Correct? Now Yes, sir. residue at the point 2. यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में करना रहेगा. तो फार्मूला इज, यू सी द फार्मूला इफ यू वांट टू सी हियर. 1 by m minus 1 factorial z minus z naught d power m minus, अपने पास m की वैल्यू 4 है ना. ऑर्डर m वैल्यू, राइट ना. Yes, sir. हाँ. 4.
तो 1 by 4 minus 1 factorial, 4 minus 1 factorial, limit z tends to 2, this is z minus 2, सॉरी यहाँ पे आपको डेरिवेटिव भी करके करना है। अब देख सकते हैं फॉर्मूले में कैसा बताए, लिमिट लिखना है फिर डेरिवेटिव। d minus 3, 4 minus 1 is 3, नो, एक कम लेना है, yes dz power 3 of f of z, of, you can see the formula, we have z minus z naught also. So this is, here we have z minus 2 here, whole to the power of 4 into f of z. Now if you simplify, it is 1 by, it's a 4 minus 1 is 3 factorial into limit z tends to 2 d power 3 dz power 3 z minus 4 z minus 2 whole power 4 into f of z value is 1 by z minus 2 whole power 4 into z minus 1. okay These two terms are cancelled here. Okay, this is equal to 1 by 3 factorial is 6, limit z tends to 2, यहाँ पे बचा what, d cube d cube by dz dz cube of 1 by into 1 by z minus 1 3 times डेरिवेटिव करके लिमिट अप्लाई कर। फर्स्ट टाइम Okay. डेरिवेटिव इज 1 by x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, माइनस 1 by x स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव में आपको करते जाएंगे, बताते जाएंगे इंशाल्लाह। 1 by 6 लिमिट z tends to 2, this is d square by dz square into 1 by x differentiation is minus 1 by x square. Now minus we can take outside, 1 by 6 सर फॉर्मूले x चाहिए। का है ना सर, तो फिर से नहीं करते हो? इनर फंक्शन 1 होता z का, Okay. लिमिट z टेंस टू 2 और एक बार अप्लाई करेंगे डी बाई डी जेड, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब में एक्स की वैल्यू z माइनस 1 है, फिर से इनर फंक्शन 1 हो जाता है, ये माइनस 2 ऑल्सो Okay. आउटसाइड, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाई 6, लिमिट z टेंस टू 2, राइट, we have left off is d by dz of 1 by z minus 1 whole cube, फिर से 1 by x क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3 by x पावर 4, यहाँ पे आपको मैं अभी फॉर्मूले लिख देता हूँ इसके बाद, इट्स 1 by 3 लिमिट z टेंस टू 2, लिमिट z टेंस टू 2, इट्स माइनस 3 by z minus 1 whole to the power of 4, ये माइनस 3 को भी आउटसाइड निकाल दिए, so then finally minus 3 outside, minus 3 by 3 is minus 1, finally limit z tends to 2, we have left is what, 1 by z minus 1 whole to the power of 4, and now if you apply the limit, z की प्लेस पे अगर आप 2 रख दिए तो it is 1 by Okay. 2 minus 1 whole to the power of 4, it's what, answer is minus 1। तो जो फार्मूले अपन यहाँ पे यूज करे थे वो ये, d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square, d by dx of, if it is 1 by x square, because we have taken minus outsides, this is minus 2 by x cube, and this minus 2 also outside, suppose, because it is a constant, d by dx of 1 by x cube is equal to it's a minus 3 by x power 4। अगर सपोज ये फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर लेना बोलते हो, सीधा सीधा ऐसा कर लेना, d by dx of x to the power of minus 3 कर देना, तो it's nx power n minus 1, nx power n Okay. minus 1 like that।
So then simple answer is -3 by x power 4. खत्म. Right? Yes. So this यहाँ पे अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को. पोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. तो नेक्स्ट टॉपिक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रेसिड्यू थ्योरम के ऊपर जाएंगे. Okay. व्हाट इज द रेसिड्यू थ्योरम एंड वी डोंट हैव द प्रूफ. प्रूफ आपको करना नहीं है एग्जाम में, पूछेगा नहीं आपसे, स्टेटमेंट पूछेगा आपसे. सो लेट मी गो फॉर दैट रेसिड्यू थ्योरम. उसका जो स्टेटमेंट है, राइट द स्टेटमेंट. Now you see here what is the residue theorem. This is our important discussion. Residue theorem. So statement एग्जाम में पूछ सकता, तो मैं आपको स्टेटमेंट भी बता दे रहा हूँ. यहाँ पे देखिए क्या है स्टेटमेंट. If f of z, if f of z is analytic, if f of z is analytic in a closed curve C, closed curve C, accept at a finite, accept at a finite number of singular points, accept at a finite number of singular points within C, then integral over C f of z dz, integral over C f of z dz is equal to 2 pi I into sum of residues, at all singular points within C, within C. ये आपका स्टेटमेंट है. अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाह रहा हूँ आपको. अब देखिए यहाँ पे एक सपोज आपके पास एक क्लोज कर्व सी है, ठीक है, Okay. है ना. चल, अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ अपने पास ये जो क्लोज्ड कर्व सी है आपका, ये सी, ये क्लोज्ड कर्व आपका सी है. इसके अंदर सपोज क्या बोल रहे हैं, ये एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन क्लोज्ड कर्व सी. पूरे ये कर्व के अंदर फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है, एनालिटिक है. एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स. इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, सपोज z1 एक पॉइंट है,
Z2 एक पॉइंट है, Z3 एक पॉइंट है, इसी तरह से Zn नंबर ऑफ पॉइंट्स है कुछ। वो पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे ये जो कर्व है वहाँ, वो कर्व वहाँ पे एनालिटिक नहीं है, समझ में आ रहा? पूरे के पूरे Okay. रीजन में एनालिटिक है, मगर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स कुछ है उसके अंदर जिसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, Okay. Okay. एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स विद इन सी, देन अगर आप उसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करें तो रेसिड्यू थ्योरम से 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स विद इन सी। तो इसको अगर आप ये फार्मूले को और एलोबरेट करके लिखे तो ऐसा होता हो, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इट्स व्हाट 2 पाई Aye, आई इंटू, और अगर डिटेल में देखें तो आप रेसिड्यू एट Z1 प्लस रेसिड्यू एट Z2 प्लस एंड रेसिड्यू एट Z3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड रेसिड्यू एट Z0। समझ में आ रहा ना? जो पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पूरे पॉइंट्स का रेसिड्यू फाइंड आउट करके उसका सम करके 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करे तो इंटीग्रल की वैल्यू मिलती है। अब आपको पिछले क्लास Okay. पिछले स्क्रीन पे आपको बता दिया मैं रेसिड्यू कैसा फाइंड आउट करते। Yes. यहाँ पे सपोज कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स है, उसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो 2 पॉइंट्स पे क्या करना Okay. है, रेसिड्यू फाइंड आउट करना, ऐड करना, 2 पाई आई से मल्टीप्लाई, खत्म। तो अपने को प्रॉब्लम्स करना है रेसिड्यू के ऊपर, ठीक है? एक क्वेश्चन करेंगे Okay. इमीडिएटली, डू इट वन क्वेश्चन, ओके ना? इवॉल्वेट क्वेश्चन कैसा आता देखिए, इवॉल्वेट इवॉल्वेट इंटीग्रल ओवर सी, इंटीग्रल ओवर सी जेड स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2। समझ में आ रहा है ना आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा? Yes, sir. ऑनलाइन में भी कुछ आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है होप, क्योंकि अपन मैं Nice, प्रॉब्लम sir. सॉल्व भी करा दे रहा हूँ ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हुए, खाली मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वेयर सी इज where C is such that mod of Z plus 1 is equal to 2। ठीक है, ये आपका इसको इवेलुएट करना है, ठीक है? और यहाँ पे कंडीशन है mod Z plus 1 is equals to 2। कैन यू फाइंड आउट व्हाट्स द सेंटर ऑफ दिस सॉल्यूशन? Center is -1, radius is 2. -1, 0, -1, 0 ना, 0. Center, और रेडियस radius 2 2. यूनिट है, और उसमें पोल्स क्या क्या है, आए Z is 2 equal to -3. 2, -3 and both -3. are simple poles। Simple pole order 1. सिंपल पोल का मतलब इस ऑर्डर 1 है, Okay. बोथ आर सिंपल पोल, सिंपल पोल्स। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों पोल्स पे रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, उसको ऐड करना है, 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना, खत्म, वो वैल्यू इंटीग्रेट Okay. हो जाता है, राइट ना? Yes. अब आप ये भी देखना है इसके साथ साथ कौन से पोल अंदर आ रहे हैं, कौन से बाहर, अंदर आए तो उसको फाइंड आउट करेंगे अपन, आपको वो कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा Okay. ऑलरेडी। अब Yes, जेड sir. इज -1, 0 का एक सेंटर बनाएंगे अपन, उसको देखेंगे कैसा बन रहा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे, दिस इज कोऑर्डिनेट 2 एक्सिस। will be inside, -3 will be outside. हाँ, तो जो अंदर है उसी को अपने को लेना है, जो बाहर है उसकी अपने को जरूरत नहीं रहेगी। Okay. ठीक है, तो -1, 0 का ये सर्कल है, यहाँ पे सपोज -1, 0 अगर इधर आ रहा तो उसका फिर सेंटर -1, 0 के हिसाब से रेडियस बनाना पड़ता। तो एक काम करेंगे, पहले तो अपन
ये पॉइंट, -0, so ये -10 3 -10 ये होता। अब 2 रेडियस यूनिट्स, तो यहाँ both will be inside only sir फिर तो ये like सपोज ये पॉइंट बाउंड्री यहाँ पे पे हो रहता गया, है। ये -2 हो गया, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो -1, 0 पे इसका सेंटर है। तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट सेंटर -1, 0 ऐसा का सर्कल में। ठीक है, रेडियस है ना सर 2 यूनिट्स। रेडियस 2 यूनिट है, यस। हाँ, so it will be coming up to 3, -1 to नहीं, -3 -1 से radius। एक यूनिट, यहाँ 1 यूनिट, अच्छा इधर भी जाना ना 2 यूनिट, सॉरी सॉरी, ये 1 यूनिट, इधर 2 यूनिट जाना पड़ता। ठीक है, so -3 भी आ जाता, बाउंड्री पे रहता, और -2 भी बाउंड्री, -3 2 भी नहीं, बाउंड्री पे टू रहता। टू टू नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 कैसा आएंगे बोलिए आप? हाँ हाँ, 2 नहीं 1 पे आएगा जाता खाली, ये 1 पे जी। जाता। 2 तो पॉइंट जो है एक ना बाउंड्री आउटसाइड पे हो रहता जाएंगे, है, एक आउटसाइड में। यस, ये थोड़ा सही बना ना। यस। Yes. तो ये जो पॉइंट्स 2 है अपना, ये जो पॉइंट्स 2 है, सपोज ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट, तो ये z इज इक्वल टू 2 है। और यहाँ पे सपोज वी आर अज्यूमिंग, सपोज दिस इज z इज इक्वल टू -3, तो आप ये रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओके। सिंस z इज इक्वल टू 2 आउट ऑफ सर्कल, आउट ऑफ सर्कल, तो इसके ऊपर अपने को पोल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और z इज इक्वल टू -3, ये ऑन द सर्कल हो जाता, ऑन द सर्कल। तो बाय रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम, मैं एक और सेक्शन लूंगा आपको, ये क्लास अभी यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, आपको नमाज के बाद में शायद एक और क्लास ले लेता हूँ, ओके आपको वो नेक्स्ट 3rd यूनिट भी स्टार्ट कर दूँ। वो ठीक। 3rd यूनिट जो है इसी का कंटिन्यूशन, ये रेसिड्यू के कॉन्सेप्ट से ही इसका रिलेशन है। ओ अगर उसको अपन थोड़ा भी लेट करें तो आपको आज का भूल गए बोले तो फिर वो समझने नहीं। दिस इज डी जेड, दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। सो दिस इज इक्वल्स टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, वहाँ पे कितने हैं अभी रेसिड्यू एट, खाली -3 बच रहा, राइट? 2 तो यस, नहीं है ना, नहीं तो है। दिस इज 2πi। तो 3 पे रेसिड्यू कैसा करेंगे? लिमिट z टेंस टू 3, z टेंस टू नॉट 3, इट्स -3, z टेंस टू -3, और यहाँ पे हो जाएगा z+3 इंटू एफ ऑफ z वैल्यू इज z² +4 बाई z-2 इंटू z+3।